अंदर। और आज हमारे साथ बहुत ही अच्छे गेस्ट स्पीकर्स हमारे साथ जुड़े हैं। कुछ लोग यूरोप से जुड़े और इंडिया इंडिया से भी कुछ लोग हमारे साथ इस कॉल पे मौजूद हैं। और उनकी भी हम एक्सपर्टीज सुनेंगे। कुछ ऐसी डिस्कशंस होंगी आज की कॉल पे जो कि आप सबके लिए बड़ी ही फायदेमंद होंगी। तो आई थिंक अगले 30 से 40 मिनट बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग ये कॉल नॉर्मली ज्वाइन करते हैं, एवरीडे ज्वाइन करते हैं। लेकिन आज की कॉल डिफरेंट इसलिए है कि आज की कॉल में हमारे जो सीईओ मिस्टर दनीस हैं, वो इस कॉल पे हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसी के साथ जो हमारे जो यूरोपियन एक लीडर हैं मिस अलीना, वो भी हमारे साथ इस कॉल के ऊपर जुड़ेंगी। तो हम उन दोनों से सुनेंगे कि किस तरीके से यूरोप की टीम ग्रो हो रही है और किस तरीके से हम एज अ कंपनी ग्रो कर रहे हैं। तो विदाउट डिले मैं साथ साथ ट्रांसलेट करता रहूंगा दोनों स्पीकर्स को, और आप तक ताकि अपनी भाषा में आपको सारा एग्जैक्टली समझ आए कि कंपनी का विजन क्या है, कंपनी किस फेज में है। क्योंकि देखिए, अब हम अगस्त में एंटर हो चुके हैं। अब आज 2 अगस्त है और 6 माह गुजर चुके हैं इस साल के 2024 के भी। तो आज की कॉल कहीं ना कहीं एक वैल्यूएशन है। आज की कॉल कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी है कि हम 6 माह बाद 2024 में कहाँ खड़े हैं, और आने वाले 6 माह 2024 के हम किस दिशा की तरफ जा रहे हैं। तो विदाउट डिले मैं इनवाइट करूंगा आज की हमारी गेस्ट स्पीकर मिस एलेना। if you are on the call, could you please join us, um, and please share your thoughts with us? How are you building in Europe? What kind of results are we looking? How we are looking to grow in Europe? And how's everything in general? Sure. Hi everyone. Hope you're doing well. I'm Elena. I'm from France. I am a mother of 2 little girls, and I know there's a huge community of Indian people here, and I'm very, very happy to be here. Thank you for the invitation. So, um, I joined MEFA around almost 2 years now. And it's really just a pleasure for me to be part of this amazing game. And I've seen the evolution of the company since the beginning, 2 years ago and today, where we are today, and all the what the company did in 2 years is just incredible. So beside my job as a mom, I am an entrepreneur, and Web3 is really the future. Is an incredible opportunity for all of us. Web3 changed our everyday life, and this is really the great and the best timing for everyone. It's not that easy to build in Europe right now, mostly right now, because have you seen on media? It is the Olympic game right now. It's summertime as well, and so everyone leave. A lot of people I know, they leave Paris. They left Paris because there's so many people in Paris right now because of Olympic Games, so they are abroad. But with consistency and with just motivation, we are still on the game, and me and all my team, all the people in MEFA in Europe, we are working very hard right now in order to prepare September. We are right now organizing a tour for September in France, in Belgium, in Spain, Switzerland, and Germany, in order to be ready. We are preparing that in order to be ready on September. And people come, go. You will see new people all the time, but this is part of a game. This is really part of a game. And in Europe, we also have all the regulations, which is not really easy. But we still maintain our motivation, and we still work. And I am here, trust me, to stay for a long term. This is a long-term game. And just to finish on that, not only I'm working in Europe, but I'm also working in Africa. Some of my people in my team, they travel a few weeks ago in Africa, building Africa. We are opening offices there, and we're working very, very hard. So stay tuned, follow me on social media, and see you soon. Thank you, sir. For what?
Thank you so much. I appreciate that. Thank you for your time. I think I would like to ask you maybe one another question before Sure. I translate to everyone what you have just said. So how do you see future with Mitha? How do you see moving forward with us? What's your thoughts? Okay, so first of all, I can't see myself in the future without MEFA. This is really very important. MEFA is a project which takes a large part in my everyday life, and as I can see how the economy of the world is going where it goes right now, what the company has done, maybe today you haven't seen how powerful it is, but trust me, the global economy is just changing so fast, and yeah, we are at the right time with the right people. Perfect. So Look, thank you so much. I think we've given you a very last minute notice, and you still made it on this call. We do appreciate that you're always available for us. What I will do now is I will go back and translate what you just said, and so everyone understand. It's important that everyone does understand what you just said. एंड देन अब सभी दोस्तों ने सुना कि मिस एलिना ने अपना एक्सपीरियंस हम सब से शेयर किया कि किस तरीके से हर कंट्री के अंदर, देखिए, हर कंट्री के अंदर, हर रीजन के अंदर अम, हम एक किस्म का चैलेंज लेके इस प्रोजेक्ट को चल रहे हैं। और आप जिस भी कंट्री में हैं, आप जिस भी दुनिया के जिस भी कोने में हैं, आपको डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। और ये सभी बिजनेस के साथ है, चाहे वो क्रिप्टो हो, चाहे वो रिटेल बिजनेस हो, चाहे वो आपका कोई भी बिजनेस हो। आपको हर बिजनेस के अंदर चैलेंजेस, हार्डशिप्स, टफ टाइम्स देखने को मिलते हैं। और मिस लिना ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि इस वक्त यूरोप के अंदर अगर आप देखा जाए क्रिप्टो को लेके, हम बहुत मोटिवेटेड हैं अपने प्रोजेक्ट को लेके। और इस तरीके से हमें भी एक डिफरेंट किस्म के चैलेंजेस वो हर डे टू डे नज़र आते हैं। जैसे कि यूरोपियन रेगुलेशंस हैं, नए लॉज यूरोप ने इंट्रोड्यूस करवाए क्रिप्टो को लेके। लेकिन उन सब से ऊपर, उसके बावजूद भी हम सभी लोग फोकस हैं अपने गोल्स के ऊपर कि मीथर को, एम कॉइन को, राइजर को दुनिया में एक सबसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। और इसी तरीके से मिस लीना ने ये भी हमसे शेयर किया कि ये जितने भी रेगुलेशंस हैं, ये हमारी कंपनी के लिए बहुत अच्छी हैं। ये जितने भी चेंजेस चेंजेस जो आ रहे हैं कंपनी के अंदर, वो हम सब के लिए एज अ होल, एज अ मीथर फैमिली, हम सब के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। क्योंकि हमारी जो कंपनी की जो फाउंडेशन है, जैसा कल हमारी लीगल कॉल थी और आप सभी लोग कॉल के ऊपर मौजूद थे, और अगर आप उस कॉल में थे तो आपने देखा कि एज अ कंपनी हम कितने स्ट्रांग हैं। एज अ लीगल एंटिटी अगर हम इसको बोलें, तो हम एक बहुत ही स्ट्रांग प्रोजेक्ट है, बहुत ही स्ट्रांग कंपनी है। इसलिए कोई भी रेगुलेशंस हो जो भी दुनिया में ले आएंगी या आने वाली हैं इन फ्यूचर, ये हम सब के लिए एज इन होल कंपनी बहुत अच्छे इनिशिएटिव हैं जो कंपनी ने लिए आप सबकी सेफ्टी और बेटरमेंट के लिए। और इसीलिए हम सब एक्साइटेड हैं कि दुनिया में जब जब चेंजेस आएंगे, तब तब मीथर एज एन होल एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी, एक स्ट्रॉन्ग कंपनी बन के सामने आएगी। क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में, इस कंपनी में लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड करने के लिए आए, और इसी के ऊपर हम फोकस हैं। देखिए, मोमेंटम कभी आपका बढ़ेगा, कभी आपका कम होगा। ये नेटवर्किंग का पार्ट है, ये नेटवर्किंग का एक हिस्सा है। इसी तरीके से अगर आपका रिटेल बिजनेस है, तो जब तो आपका रिटेल बिजनेस, जब जब कोई भी सिचुएशन आएगी, तो आपके बिजनेस को इफेक्ट लाजमी होगा। क्रिप्टो भी किसी से डिफरेंट नहीं है, क्योंकि बिजनेस मॉडल सेम है। कभी कभी आपका मोमेंटम बहुत ऊपर जाएगा, कभी मीडियम रहेगा, कभी नीचे आएगा। लेकिन हम सबका गोल एज एन होल, एज अ मीथर फैमिली देखें, मीथर कम्युनिटी देखें, एज अ कंपनी कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर देखें, तो हम सबका गोल एक है कि हमने सारे हर्डल से, सारी मुश्किलात से, सारी मुश्किलात को हम फेस भी करेंगे और उनसे आगे निकलेंगे।
कि देखिए अगर यूरोप में देखें तो इसके डिफरेंट चैलेंजेस है, अगर इंडिया में देखें एक डिफरेंट चैलेंजेस आपको देखने में मिलेंगे, लेकिन एज अ कंपनी हम आज भी उसी तरीके से मोटिवेटेड हैं जिस तरीके से 4 साल पहले जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था हम मोटिवेटेड थे। और मिस लीना ने बड़ी अच्छी बात की कि मैं अपनी जिंदगी मीथर के अलावा नहीं देखती, क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही मीथर है। तो आई थिंक अगर आपकी टीम्स के अंदर आपके अंदर एक ऐसा विजन है, आपकी टीम्स के अंदर एक ऐसा विजन है कि आपका विजन क्लियर है, आपका फोकस है, आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, तो आई थिंक सक्सेस ऑलवेज आपके पास आएगी और आप बिल्कुल सक्सेसफुल होंगे। सो थैंक यू सो मच मिस एलेना। आई डिड माई बेस्ट टू ट्रांसलेट वर्ड बाय वर्ड what you have just said. So thank you so much from Miss Selena. और इसी के साथ मैं आज हमारे जो मेन गेस्ट स्पीकर हैं, हमारी कंपनी के सीईओ भी हैं, ही इज ऑल्सो ऑन द कॉल विद अस एंड वी विल लव टू हेयर फ्रॉम हिम। आई ऑलवेज गेट मोटिवेटेड व्हेन I see you, even though you are way too young than me, but I always learn from you something really really good. So आज हमारी कंपनी के जो सीईओ हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, तो हम इनसे कुछ चीजें सुनेंगे। और माइक ओवर टू यू मिस्टर डनीश सर। थैंक यू, ओवर टू यू। Thank you very much, Fawad. Thank you so much for also inviting me in this call today, ladies and gentlemen. I hope you can hear me perfectly, right? Yeah, that should be nice. Let's close down this whiteboard first. I don't know who started it. So please, one of the co-hosts, please. Perfect. So ladies and gentlemen, from my side, Assalamu alaikum, good evening, good morning, good afternoon, wherever you are right now in this beautiful world. I am here in Europe and it is August, it is summertime, but you can see a lot of people, instead of going out enjoying their weekend, they are joining the live session. And this is a extremely positive message for us because we can see how dedicated our community is. And Mr. Fawad will translate my content, so please keep quickly translating, and then I will start with my news and what I have to share with the community. You want me to just translate now or once you finished? No, translate step by step. It's easier for the people. Okay, as you wish, sir. So जैसा कि मिस्टर डनीस ने कहा कि आपको पता है कि यूरोप के अंदर इस वक्त अभी समर है, और उसके बावजूद समर, क्योंकि यूरोप में क्या है कि जब समर हॉलीडेज होते हैं, एंड आई एम श्योर जहाँ जहाँ भी आप जिस कंट्री से भी हैं, इंडिया से हैं, तो वहाँ पे भी जब भी हॉलीडेज होते हैं तो सब लोग अपने हॉलीडेज के लिए बच्चों के साथ बाहर जाते हैं। उसके बावजूद आप आज जिस तरीके से लोगों ने इस कॉल को ज्वाइन किया, ऑलमोस्ट 1,000 से ऊपर लोग हैं जो आज इस कॉल के ऊपर हैं, जूम के ऊपर, और काफी ज्यादा लोग यूट्यूब और फेसबुक और इंस्टाग्राम लाइव के ऊपर भी ज्वाइन कर चुके हैं। सो आई थिंक ये एक आप सबके लिए गुड न्यूज़ है, और मेरे लिए भी एक एक्साइटिंग न्यूज़ है कि उसके बावजूद आज सैटरडे है, सॉरी आज फ्राइडे है, और आज आप इस कॉल के ऊपर जुड़े हैं। सो थैंक यू सो मच। और मैं कुछ न्यूज़ आपके साथ अब शेयर करना चाहूँगा। यस सर। And today is a little bit different. I don't have any slides for you. I want to talk personally to you and give you the latest updates, what's going on. Yesterday, you had an amazing update from our legal team regarding the business, regarding everything connected and related to the company. And I think, or not only myself, but if you go out there in the market, you can see one thing, that nobody in this industry goes out with their legal team and educate the people about their rights, educate the people about how the company is operating. And if you look it from another side, I think that's more than positive regarding the business and the project, because you are getting the education and you will understand the picture how the company is operating. Yesterday, our legal team explained you what are your rights, explained you where is your position in the company, explained you also how the company is operating. And this is something very unique in this industry because nobody else is doing this out there. And I hope you really enjoyed these sessions. We're going to have more in future.
जैसा कि आप सभी दोस्त कल एक कॉल पे जुड़े थे जो कि हमारी लीगल टीम के साथ थी, और ये आई थिंक कंपनी का इनिशिएटिव था कि आप सबको बताया जाए कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर आई थिंक हमारी जो कंपनी है वो पहली कंपनी है जिसने ये इनिशिएटिव लिया। आपको आपके लीगल राइट्स बताए गए कि क्रिप्टो के अंदर आपके लीगल राइट्स क्या हैं, और आप सबको ये कॉन्फिडेंस देने की जो दिया गया कल की कॉल पे कि हम एज अ कंपनी आप सबके लिए आपके सबके साथ खड़े हैं। एज अ प्रोजेक्ट हम आपके सबके सपोर्ट के साथ इशू है। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, हमारे पास हमारी अपनी लीगल टीम है जो कि आपकी हेल्प सपोर्ट और आपको गाइड भी करेगी, और ये आपके लिए कॉन्फिडेंस की भी एक बड़ी अच्छी बात है। फवाद सर, आई थिंक आपकी आवाज नहीं आ रही है. यू हैव ड्रॉप्ड, आई थिंक. There could be some There is some technical. technical issue at his end, I think. Yeah. अनुराग सर. I think Mr. Anwar, yeah, he is back in the call. Yeah. अनुराग सर, प्रोसीड एज ए इंटरप्रेटर सर. क्योंकि कोई भी टीम, ओके आई एम बैक, क्योंकि कोई भी टीम आपको Mr. Fawad is back, sir. लीगली कोई भी टीम आपको नहीं लेके आती अपने अपनी लीगल टीम आपके सामने, क्योंकि हर कंपनी का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है। हम वाहिद कंपनी है जिन्होंने लीगली आपके साथ काम किया जुड़ के और आपको इंफॉर्मेशन दी, ताकि आप सबको ये इस चीज का एहसास रहे कि आपको कहीं ना कहीं जो डर है क्रिप्टो के अंदर कि लीगल साइड क्या रहने वाली है, उसके लिए हम इसको टाइम टू टाइम जूम कॉल को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे ताकि आप तक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन डायरेक्ट सोर्स से पहुंचे। डन। The reason why we are doing something like this is, you heard it before from Miss Selina, from Mr. Fawad, you heard it all the time. We are here for the long run. And if you want to run something for a long time, you have to educate your people and your community. And that's why we focus all the time on education. Only if people have the right information, they can do the right actions. And that's why we are trying to educate the community in every aspect and in every topic that we are doing. And one thing, the last thing about the legal side is, ladies and gentlemen, this is the most sensitive part of a project. This is the most sensitive information of a company, and we are sharing it with you as a community, and nobody else would do this. Maybe some, but the most people out there wouldn't share with it with you, because it is the most sensitive part of a company. But we are transparent and showing you how we are operating, where we are located. And the great thing is, Miss Selina said maybe she is struggling in France with regulations, but it is the time now to get regulated in crypto. And when regulations come in, big major companies come in. You have seen it with Bitcoin ETFs, you have seen it with Ethereum spot ETFs. When regulations come, the game, the big stone is rolling, ladies and gentlemen, and it is a great, great and positive thing in the crypto market. और आई थिंक हमारा जो इनिशिएटिव था इसको एज अ लीगल टीम को ऑन बोर्ड करना और आपके साथ ये सब इंफॉर्मेशन शेयर करना, क्योंकि हम हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे अपनी टीम्स को अपने लीडर्स को यही कहते हैं कि हम इस प्रोजेक्ट में लॉन्ग टर्म के लिए हैं। तो जब आप लॉन्ग टर्म का विजन आपके साथ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक लीगल एंटिटी मौजूद हो, एक लीगल कंपनी हो जो आपकी हेल्प सपोर्ट और आपको गाइड करे, क्योंकि अब दुनिया क्रिप्टो की रेगुलेशंस की तरफ जा रही है। और हमने देखा बिटकॉइन ईटीएफ अप्रूव्ड हुआ, एथीरियम का ईटीएफ अप्रूव्ड हुआ, और ये जो दो बड़े इनिशिएटिव दुनिया ने लिए
और ये रेगुलेशंस इनके अंदर आई, इससे आप देख रहे हैं कि क्रिप्टो के अंदर बहुत बड़े बड़े हेज फंड्स ने पार्टिसिपेट किया, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ने पार्टिसिपेट किया, और आने वाले फ्यूचर में बड़ी बड़ी कंपनी ब्लैक रॉक जैसी, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी हेज फंड कंपनी है, जेपी मॉर्गन जैसी कंपनीज, इसी तरीके से बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स हेज फंड्स हैं, वो जब इसमें क्रिप्टो में एज आ इसको जब सेफ हेवन समझेंगे, जब उनको समझ आएगी कि ये लीगली एंटिटी है, तो इससे एक बहुत बड़ा पैसा, एक बहुत बड़ा कम्युनिटी जो कि क्रिप्टो की तरफ नहीं देख रही, वो भी अट्रैक्ट होगी। इसीलिए हमने अपनी लीगल टीम को बिल्कुल ऑन बोर्ड किया और आपके साथ शेयर भी किया, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहे कि आप एक उस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं जो एक बहुत लॉन्ग टर्म चलेगा। और यही इंटेंशन थी कंपनी को लीगल टीम को ऑन बोर्ड करने की और आपको इन्फॉर्म करने की, ताकि टाइम टू टाइम हम उनको कॉल पे इनवाइट करें और आपके क्वेश्चंस को भी आंसर करें, जो आपको लीगल इश्यूज आएंगे फ्यूचर में उनको भी ओवरकम करें, ताकि हम एक लॉन्ग टर्म तक बिजनेस बिल्ड कर पाएं। तो ये एक बड़ी ही अच्छी न्यूज़ है कि रेगुलेशंस क्रिप्टो में आ रही हैं उन कंपनीज के लिए जो कंपनीज सिस्टमेटिकली बिल्ड हुई, जो प्रोजेक्ट्स लीगल तौर के ऊपर बिल्ड हुए, लीगैलिटीज को मद्देनजर रखते हुए, लीगैलिटीज को सामने रखते हुए वो बिल्ड हुए, उनके लिए ये बहुत ही ग्रेट न्यूज़ है। और आप सबके लिए, क्योंकि आप उस कंपनी का हिस्सा हैं जो कि एक लीगल एंटिटी है, और आने वाले फ्यूचर में जो भी रेगुलेशंस क्रिप्टो में आएंगी हम उनके साथ मैच करेंगे, और आपको फिर एहसास होगा कि हम वाकई में ही एक लीगल लॉन्ग टर्म बिजनेस हैं जो हमने मिलके बिल्ड किया। And the next thing is, you have seen the crypto market is not going anywhere. It's not even going up. It's not even going down. It's moving somewhere around. And for the people who are not that long in crypto, it might seem like, hey, it's dead. But it's not dead. It's not dead because, ladies and gentlemen, we are in talks with venture capitalists, with investors who want to come inside of this game. And maybe you will ask yourself, okay, why? Why should they come in now? Crypto market is not really moving. Maybe Mcoin is a little bit down. Why is it so interesting? Ladies and gentlemen, for the people who are not that long in crypto, I want to explain quickly in detail, and Mr. Fawad will explain. This time right now is the time in the future you would wish to buy now. Every time when you are thinking, when the markets go up, you are thinking, oh, I should have bought when it was down. This time is right now. Everything in crypto space is going in a positive way. US elections out there are going in a positive way. Mr. Biden, the ex-president of the United States, is stepping down. Mr. Trump is coming in front, and he's really, really crypto friendly. He is a businessman. He understands business. So you can imagine spot ETFs have been approved. Nothing happened. Big companies came out like Coinbase, showed their revenue. Not really that much happened. Mr. Trump is coming. Not really that much has happened. Imagine when the bear market will be over and the bull market will start. You would wish to be in this position right now and say, hey, I should have bought crypto right now. I should have bought crypto 2 months ago. And this is the, how should we say it? We say it in the past, crypto winter, even if it's summer, but you should use these crypto winters to place yourself inside the market with a great opportunity to buy, and after that take the whole bull run. So this is the right market situation right now, and the market update and the opportunity that you have with that market situation right now. जैसा कि आप सबको पता है कि जैसे आपने बिटकॉइन को देखा, एथेरियम को देखा, और इसी तरीके से जितने भी क्रिप्टोज हैं, बिटकॉइन की ईटीएफ अप्रूव्ड हुई, बहुत बड़ी मार्केट में न्यूज़ थी कि बिटकॉइन की ईटीएफ अप्रूव हुई, और बहुत बड़े चांसेस थे कि बिटकॉइन हिट करता ऑल टाइम हाई 100,000 और अबव। एथेरियम का ईटीएफ अप्रूव हुआ, लेकिन प्राइस उस तरीके से मूव नहीं हुई। और इसी तरीके से जो अनप्रडिक्टेबल सिचुएशंस हुई पिछले कुछ मंथ्स में,
कुछ हफ्तों में कि जो बाइडेन ने अपना स्टेप डाउन किया, जो एक्स प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, और डोनाल्ड ट्रंप सामने आए जो कि बड़े ही प्रो क्रिप्टो हैं, और उनकी अनाउंसमेंट के बाद भी क्रिप्टो ने इतना बड़ा मूव नहीं लिया। और इसी के साथ साथ कुछ लोगों का ये क्वेश्चन रहा है काफी अरसे से कि एम कॉइन का प्राइस कब मूव होगा और हम कब देखेंगे दोबारा ऑल टाइम हाई एम कॉइन के अंदर। तो आप एक चीज को ये समझ लीजिए कि इस वक्त जो ये टाइम अब गुजर रहा है, ये इसको हम बोल सकते हैं क्रिप्टो विंटर, या ये वो टाइम है जो शायद आप सबकी जिंदगी में दोबारा ना आए। कुछ लोग कॉल पे आज ऐसे भी हैं जो पहली दफा क्रिप्टो में इन्वॉल्व हुए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पिछले कई सालों से क्रिप्टो मार्केट का एक्सपीरियंस है। लेकिन दो चीजें, एक चीज उन दोनों लोगों में कॉमन है, अगर आप नए हैं आज और इसको शुरू शुरू में क्रिप्टो में इन्वॉल्व हैं, या अगर आप मार्केट में क्रिप्टो की मार्केट में कई सालों से जुड़े हैं, तो एक चीज आप दोनों में कॉमन है, और वो कॉमन ये है कि ये एक अनप्रडिक्टेबल टेरिटरी में अब आगे खड़े हो गए, कि जिसमें इतनी बड़ी न्यूज़ आई बिटकॉइन को लेके, एथेरियम को लेके, कॉइन बेस को लेके बड़ी बड़ी न्यूज़ आई, लेकिन हमने प्राइस की मूवमेंट उस मुताबिक नहीं देखी, हमने प्राइस की मूवमेंट नहीं देखी। तो आई थिंक ये जो टाइम है, ये बाय का टाइम है, ये वो टाइम है जिसमें अब हम बाय करेंगे तो मार्केट जब एकदम से पंप लेगी, और मैं ये बात याद रखिएगा, शायद हम दोबारा इस कॉल के ऊपर ये डिस्कस ना कर पाए, कि जब ये प्राइस पंप लेगी तो ये एक एक्सट्रीम ही पंप होगा। क्योंकि जब जब हमने मार्केट को सोचा कि ये अब ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, तब तब मार्केट ने हमारे साथ ऑपोजिट किया। और इसी तरीके से जो लोग आज ये एम कॉइन के कहीं ना कहीं बारे में सोच रहे हैं, तो आप सरप्राइज होंगे कि जब हम प्राइस एकदम से, जब मार्केट मूव होगी, सब कॉइन्स मूव होंगे, मार्केट एकदम से बाउंस लेगी, तो फ्यूचर में बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं जो हम कर सकते हैं एज अ कंपनी, एज अ होल इन होल। तो वो कहते हैं ना इंग्लिश में कि इट्स नेवर टू लेट। तो प्लीज आज टाइम है इसको बाय होल्ड करने का, क्योंकि आने वाले समय में ये किसी डायरेक्शन में भी जा सकती है, और आप इससे बिल्कुल शॉक हो जाएंगे इसको देख के। And two more things that I have to tell the community is the first one for now is end of the year, we will celebrate our global success day internationally. Yes, you will do it locally in India, in France, in London, in Europe, wherever we are. We will do it locally, but together we will also do it internationally by end of this year. It will be an international event somewhere where you will really, really enjoy it. It will be a location different than Dubai, and it will be a new location for us as a company, also because we're opening new markets with that event also by end of the year. We will announce it very soon, but be prepared. End of the year, we will be together. परफेक्ट। इसी के साथ साथ टुवर्ड्स इस साल के एंड की तरफ जब हम जाएंगे, और जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो ग्लोबल सक्सेस डे होता है, हम उसको एक प्रॉपर सेलिब्रेट करते हैं हर साल की तरह, इस साल भी हम उसको सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन इस साल सेलिब्रेशन बिल्कुल डिफरेंट होने वाली है। वो डिफरेंट इस तरीके से होगी कि इस साल आप अपने रिस्पेक्टेड इवेंट्स तो करेंगे, इंडिया में इवेंट्स होंगे अपनी लोकल टीम्स के लिए, लोकल रीजन्स के लिए, यूरोप में होंगे उन टीम्स के लिए, यूके में होंगे, इसी के साथ साथ डिफरेंट कंट्रीज के अंदर उनके इवेंट्स तो चलते रहेंगे। लेकिन जो हमारा एक कलेक्टिव कलेक्टिव इवेंट होगा, इंटरनेशनल इवेंट, वो होगा इस साल इंटरनेशनली किसी एक कंट्री में, दुबई में नहीं होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा डिफरेंट लेके चलेंगे इस साल इसको। तो इंटरनेशनल जो होगा इवेंट, उसमें हम बहुत सारी नई चीजें, नई मार्केट्स को ओपन करने जा रहे हैं। तो इसलिए ये इवेंट आप सबके लिए एक बड़ा ही एक्साइटिंग इवेंट होने वाला है। और वो किस कंट्री में होगा, मिस्टर जनीस ने कहा ये मैं बाद में अनाउंस करूंगा कि किस कंट्री में होगा, लेकिन आप प्रिपेयर रहिए, इस साल का जो इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है वो बिल्कुल एक नई कंट्री में होगा। तो ये भी आप सबके लिए एक न्यूज़ है कि इस दफ़ा जो हमारा जो ग्लोबल सक्सेस डे होगा, वो हम पूरी दुनिया से लीडर्स इकट्ठे होंगे एक जगह पे, ना कि सिर्फ एक कंट्री और एक रीजन का हो। And last but not least, the metaverse, MetaRise, our, I would say, project, not for the future, for the next decades. Yeah, ladies and gentlemen, something that we are really proud of.
something that we explained many times why it is so unique and different. The major update that I have for that is that we are in talks with big international brands, and these brands, we will help them to build inside of our metaverse. And how are we going to help them? We will provide them free plots, free spaces. We will provide them the development for free to be part of our metaverse. And now you may ask yourself, okay, why will this benefit us when they get it for free? Imagine one thing. If you are, and it is very common in crypto space that when people make good money in crypto, they go to big brands. I don't want to name them, big Italian or French designers. They spend their money there. They want to show the community. They want to show the people the gains from their crypto markets, from the crypto trades. And these brands are getting big profits, but without any use case. Imagine this use case will be inside our metaverse, and people will spend their money on designer luxury brands inside of our metaverse. After that, they are willing to pay a lot of money to be part of that. You have seen it maybe in different metaverses, what happened. Big companies like Coca-Cola, big major brands, they bought in Sandbox, for example, they bought land just because it was an attractive marketplace for them. Same will happen in our own metaverse. We will place some brands, some known brands inside of the metaverse, and the first big brand will come from the UAE. Also, we have one already from UK, London, and step by step, even more and more. So you will see a lot of improvement, not only regarding development, but also regarding partnerships with international brands. और जो हमारा मेन आज की जो लास्ट मैसेज है आप सबके लिए वो ये है कि हमारे जो मेटावर्स की डेवलपमेंट है वो बिल्कुल ऑन ट्रैक है। और जिन जिन लोगों ने भी मेटावर्स में अपना लैंड लिया, जो अपना परचेज कर चुके हैं, उनके लिए तो बहुत सारी ही ग्रेट न्यूज़ हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट को डेवलप होते हुए टाइम लगता है, और आप सभी ने देखा कि किस तरीके से कंपनी को एज अ मीथर ऑन इट्स ओन डेवलप होते हुए 4 साल लग गए, और आज हम एक एक अच्छी फॉर्म में दुनिया के सामने हैं। इसी तरीके से मेटावर्स के अंदर भी, क्योंकि यह बिल्कुल स्टार्ट है, और शायद आप में से कुछ लोगों को बिल्कुल समझ ना आए, लेकिन आने वाले कुछ सालों में जब आप देखेंगे इसको कि हमारे मेटावर्स के अंदर एक ऐसी ऐसी बड़ी कंपनीज को ऑन बोर्ड हम कर रहे हैं कि जो हमारे लिए ना सिर्फ एज अ कंपनी ऑन इट्स ओन बट ऑन इट्स होल एज अ इंडस्ट्री बहुत ही बेनिफिशियल होगा। क्योंकि हम जिन जिन प्रोजेक्ट्स को ऑन बोर्ड कर रहे हैं वो एक बहुत ही बड़ी कंपनीज हैं, और हम इनवाइट कर रहे हैं बड़ी कंपनीज को कि वो हमारे प्लेटफॉर्म पे आएं और अपने प्रोजेक्ट्स को शो करें। और ये सब के लिए एक ओपन इनविटेशन है। इसी के साथ साथ होगा क्या कि जब ये कंपनीज हमारे साथ ऑन बोर्ड आएंगी, उनके आने के साथ वो जो अपनी ऑडियंस है उनको भी ऑन बोर्ड करेंगी हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर, जो कि मेटाराइज है। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो हमारा मेटाराइज है, हमारा जो राइजर टोकन है, उसके अंदर किस तरीके से आपको ग्रोथ नजर आएगी, किस तरीके से मार्केट के अंदर उसके अंदर आपको लोगों के अंदर एक पॉजिटिव वाइब नजर आ भी रही है, और फ्यूचर में भी आएगी, और ये आती रहेगी। क्योंकि क्योंकि मेटावर्स को लेके अगर बात करें तो आप सब जानते हैं एआई और मेटावर्स ही फ्यूचर है। तो जब एआई और मेटावर्स फ्यूचर है, तो शायद हम अब जो आज डिस्कशन कर रहे हैं, कुछ लोगों के लिए ये बिल्कुल एक समझ ना आने वाली बात हो, और कुछ लोग इसको बिलीव भी ना कर सकें। क्योंकि देखिए, जब भी टेक्नोलॉजी एक नई दिशा पे जाती है, जब भी टेक्नोलॉजी एक नई टेक्नोलॉजी हम लॉन्च करते हैं या दुनिया में आती है, तो शुरू के अंदर, उसके स्टार्ट के अंदर उसको एक्सेप्ट करना बहुत से लोगों के लिए ये इम्पॉसिबल रहता है। और लेकिन जब लोग अगर हम आज बिटकॉइन की बात करें, तो आप सब जानते हैं कि 4 से 5 साल पहले अगर आप बिटकॉइन की किसी से बात करते थे, तो लोग इसको भी स्कैम कहते थे। लोग यही कहते थे कि शायद ये कभी चलेगी नहीं, ये शायद ये बंद हो जाएगी। लेकिन आज सभी लोग बिटकॉइन बाय करना चाहते हैं। आज सभी लोग क्रिप्टो के इन्वॉल्व होना चाहते हैं। मेन स्ट्रीम पे इसकी एक्सेप्टेंस
इसी के साथ साथ अगर हम बात करें मेटाराइज की, तो ये उसी स्टेज के ऊपर है, क्योंकि ये बिल्कुल अर्ली स्टेजेस के ऊपर है। आपने इसके अंदर पूरा फोकस रखना है मेटाराइज को लेके, और इसके अंदर आपने एजुकेशन लेनी है और अपने आप को एजुकेट करना है कि किस तरीके से आने वाले कुछ सालों में आप देखेंगे कि मेटाराइज सिर्फ एक प्रोजेक्ट, जो मेटाराइज की बात कर रहा हूँ, मीथर के बाकी इकोसिस्टम की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मेटाराइज $1 बिलियन इंडस्ट्री बन के आप सभी के सामने आएगा। और सभी जो लोग इसके अंदर जुड़े, आप सभी आने वाले कुछ सालों में जब आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको प्राउड होगा, ना सिर्फ कंपनी के ऊपर बल्कि अपनी इंस्टेंट के ऊपर, कि आपने इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने जब ये बिल्कुल नया था। And thank you for the translation until now. My last words for this call are, ladies and gentlemen, a lot of people out there in the market or in this industry don't understand one thing. And there was one small gentleman in this world, a couple 100 years ago, I think, Napoleon Bonaparte. He said that a lot of people are not succeeding because they trade their long-term goals, they trade their long-term vision for short-time satisfaction. And what does it mean in detail? It means that a lot of people, they are giving up on their long-term dreams. They are giving up on something that they're working for a couple years, a couple weeks, or a couple, let's say, months, and they're giving up on that for a short time satisfaction. And let me give you a real life example before Mr. Fawad will translate this part. If I go back in 2020 and I would tell you, hey, in 3 years, in 3.5 years, we will have our own, let's say here, M card. We will have our own watch with Frank Miller. We will be the busiest stall at Token 2049 in Singapore, in Dubai. We will have international events with thousands and thousands of people. If I would tell you all these things and guarantee you from the beginning onwards, would you look around left and right for something else, or would you work towards that goal? And what does it mean in your case right now? When we are showing you long-term plans, when we are showing you long-term projects, ladies and gentlemen, and you would be in the same position like people have been maybe in 2020, 21, you wouldn't look for left and right. You wouldn't look for short-term pleasure or for short-term goals. You would work day by day for the long-term vision. And that's what is in our hearts. That's what is in our minds. And these are our goals. Something for the long run and something for the future. और इसी तरीके से मिस जनीस ने बड़ा अच्छा एक स्टोरी बताई। उन्होंने कहा एक इंसान गुजर चुका है आज से 100 साल पहले, नेपोलियन। उसने एक बहुत ही बड़ी बात की कि कुछ लोग ऐसे भी दुनिया में हैं जो शॉर्ट टर्म प्लेजर, जो आप थोड़े से समय का इंजॉयमेंट के लिए लॉन्ग टर्म का जो है मजा वो खो देते हैं। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि आप छोटा बेनिफिट देख के पूरी जिंदगी का जो प्लेजर है या गोल है उसको खत्म ना कीजिए। क्यों? क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म देखना है किसी भी बेनिफिट का, किसी भी चीज का, कि आने वाले 10 साल में, आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल में आपको इसका क्या बेनिफिट होगा। और मिस्टर तनीश ने बड़ा ही अच्छी मिसाल दी कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ छोटे समय का प्लेयर चाहते हैं, सिर्फ छोटे समय का बेनिफिट चाहते हैं। तो हम एज अ कंपनी एक लॉन्ग टर्म कंपनी है कि अगर मिस्टर दनीश ने कहा कि अगर हम 2010 में होते, अगर हम 2020 में मैं आपके पास आता और आके आपको बोलता कि ये मीथर बिल्कुल नई स्टार्ट हुई है और आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास चॉइस है, हम आने वाले समय में अपना बैंक कार्ड लॉन्च करेंगे, अपनी वॉच लॉन्च करेंगे फ्रैंक मुलर के साथ, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करें, आप इसमें ज्वाइन करें। तो कितने ही लोग हैं जो ज्वाइन करते। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया, आज वो लोग मल्टी मिलियनर बन चुके हैं। जिन लोगों ने बिलीव किया सिस्टम पे, कंपनी के विजन पे और कंपनी की लीडरशिप पे, आज वही लोग हैं जो एक बहुत बड़े सेटअप में हैं। और जिन लोगों ने बिलीव इस चीज का नहीं किया, आज वो लोग सीनरी से ऑफ हैं।
इसी तरीके से जब हम आने वाले समय की बात करते हैं, जब हम आने वाले 5, 10, 15 साल की बात करते हैं, अब वो लोग आएंगे, अब वो लोग हैं जिन लोगों को अभी हमारे विजन के साथ जुड़ के काम करना है, हमारे विजन के साथ विजन अपना जोड़ के लॉन्ग टर्म करना है। और मिस्टर दनिश ने बड़ा अच्छा कहा कि जो लोग लॉन्ग टर्म विजन वाले हैं वो ही हमारे साथ जुड़ेंगे, वो ही रुकेंगे, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखनी है। शॉर्ट टर्म का ग्रोथ ना देखिए कि हमारा इस मंथ में क्या बेनिफिट है, 2 मंथ बाद क्या बेनिफिट है। अगर आपका गोल, अगर आपका विजन आने वाले 10 साल 5 साल तक है, तभी आप कामयाब हो पाएंगे किसी भी इंडस्ट्री में। और ऑफ कोर्स जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो तो है ही एक लॉन्ग टर्म गेन है, एक लॉन्ग टर्म में इवेंचुअली आपको बेनिफिट होगा ही होगा। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं, जिन लोगों ने बिटकॉइन बाय किया 2009, 10, 11 में, उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट हुआ। जिन लोगों ने एथीरियम में इन्वेस्ट किया, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया जब वो शुरू के दिन में थे, आज उनसे पूछिए कि उनको बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरीके से जिन लोगों ने एम कॉइन में इन्वेस्ट किया, जब एम कॉइन लॉन्च हुआ, जब एम कॉइन स्टार्ट हुआ, क्या उनको बेनिफिट आज 4, 3, 4 साल बाद बेनिफिट हुआ कि नहीं हुआ? सब ने, एक एक बंदे ने इससे बेनिफिट उठाया, पैसे कमाए, और आने वाले दौर में भी, आने वाले कई सालों तक ये कमाते रहेंगे, ये चलता रहेगा। तो इसलिए जो मिस्टर दनीश ने आई थिंक आज की जो लास्ट बात की वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी कि विजन को लंबा कीजिए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट को ना देखिए, छोटा बेनिफिट ना देखिए कि 2 माह बाद मैं कहाँ पे हूंगा, 3 माह बाद मैं कहाँ पे खड़ा हूंगा। आप अपने आप को देखिए कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद मैं कहाँ पे हूंगा, उसको जहन में रखिए और उसके ऊपर अपनी फोर्स लगाइए और उसके ऊपर अपना ड्रीम बिल्ड कीजिए और उसके ऊपर अपना पूरा फोकस रखिए। शॉर्ट टर्म बेनिफिट को जहन से निकाल दीजिए, तभी आप एक सक्सेसफुल जिंदगी गुजार पाएंगे। वरना शॉर्ट टर्म गोल के पीछे भागेंगे तो स्ट्रेस में रहेंगे। यस सर। Yes, so I hope you understand with this call now the big picture. Yeah, I hope you have now a clear picture about what we are doing and what we are trying to give to you in your hands. We are giving you a weapon in the market out there. We are giving you something that covers everything that is needed in a Web3 project. So, ladies and gentlemen, this live, not only this project, this whole life, this whole journey that we are doing on this world is a marathon, not a sprint. So for everyone who is from day one with us, thank you very much. For everyone who joined us recently, just open the history books of Mitha and look back what we achieved until today. I think we can be very proud. And imagine what I said. If I would have told you in 2020 this and this will happen in the next 3 years, just imagine from now on what I can tell you about the next years. And from that on, I'm finished with my part. I'm really glad to have you every time in this Zoom call, Mr. Fawad. Also, thank you to everyone else out there in the market day by day, Mr. Tahir Hussein, a lot of different other big leaders. I'm trying to name them all the time, but we are growing day by day. So Mr. Fawad knows how it goes. So ladies and gentlemen, thank you from my side and to everyone else working day by day with us together. And please finish with translating. Thank you very much. Before you go, before I translate the last bit, Yes. I would like to say one thing. It's good you mentioned Mr. Tahir Hussein, and every time we had a discussion, and I always say to the people, I think Mr. Tahir Hussein on its own is, I think, is example for not only just the network but for us as well. Yes. The dedication, the hard work he's putting in the field is next to none. I think we are so proud and so lucky to have him on our side. And I'm so glad, and we're so lucky. And I would like to translate this in Hindi, Yes, please. so everyone does understand. You can add and one thing, Mr. Fawad, please, as you Sure. are mentioning.
Ladies and gentlemen, I thought all the time we are working so hard all the time. And then I met Mr. Tahir Hussain personally in India. I was for over 1 month in India with him together. And after that, I met my team in Europe, in Dubai, and I told them, you know what? We are not working. It is this gentleman. This gentleman is working and not us. So a lot of respect from my side, from the management side, and please give this message to the community. Award. Sure, I will do that. So Mr. Denise ने मिस्टर ताहिर हुसैन वो कॉल के ऊपर है हमारे साथ आज, और उन्होंने यही कहा कि